Hey, hi guys. Let's get start a Python new session. And today we are going to cover a new session on a Spark. That is read number from user. Suppose last one day in previous lecture we are creating our variable like a equal to 10, b equal to 20. We are doing some hard coding type of thing, and then doing a plus b, and then getting a result kind of thing. So these are hard coding. So can we do something like we can take a number from the user. So today, so we are going to cover this topic: input, read, and write. That is very important. Like user read number from the user. Read number number from the user. Anything. Read number from the user, or you can say that. You can say that read number from the user and uh, read string from the user, read float from the user, means everything. Instead of hard coding, on the runtime we can give this thing. Okay. And one more thing I'm gonna cover: typecasting. What I'm doing, typecasting. So these two things we are going to cover in next 10 to 15 minutes. Okay. And then we will close our today's session. So today we have covered like installation part. Okay. So let's get start. So this time I'm not going to use my interactive mode. I'm gonna, as I told you, that the best practice is create your some notepad file and try to convert in py file. Okay. So again, best practice, self documentation, like what we are going to do. So like understanding on user user input and typecasting very important. So you will get an idea about what is typecasting and how it is obtained. Okay, so first of all, as uh, we can see, suppose in our previous session, num1 equal to 20, and we took num2 equal to 30. Okay, so these two number, and then what kind of activity we are doing? I think if you remember, like print, we are using some string, like the sum of two number is what uh, then closing, and then we are passing comma, and here we can directly give num1 plus num2. Otherwise, I told you that, like, you can create another variable. You can create another variable, and num1 plus num2 you can do. This is what we did in our previous lecture, in our previous session. So please watch previous session so you will get idea about. Now I'm gonna save this file. Now I'm keeping first all files, and today what is uh, user read, but I'm making my module name is user read.py. Okay, and saving this file. Okay, so now I'm gonna run this one. I'm going to close all the cmds. So how I'm navigating my Python path, I'm gonna again tell you. So where is my all files? So in a desktop, there is a code inside a code. Sorry, not this one. Uh, oh, where I lost? Where is Sandeep? Oh, sorry. Uh, User read. This is my file. Right click, open file location. Okay, this is a path. So last, so desktop Sandeep Python learning code. Okay. So here I'm gonna type CMD. So I'm directly navigating this path. Okay. So this is a good idea. So now I'm in Sandeep Python learning code. Here I'm gonna do dir.
Through dir I can check inside this folder how many files I have and all. This is a window command. Okay, so this is not related to a Python. Okay, in Python, yeah, interesting, there is a function name dir through which you can check how many like activity we will do with that variable, like how many function we can apply, how many variable we can apply, like this type of thing we can do. But here dir something different in a window. It's a window command, generally using for searching list of files directory. So generally di represent a directory. Okay, if I'll told if I'll enter it, so you can see all the list of uh, code which we have generated last 2 days. Now today we generated this one, user.read. How we gonna run again using a Python, and I can use this user read.py. Now I can check the sum of two number is 50, means it is hard coded. If I'll open my code, so everything is hard coded. So I want user enter these number. So I want to do this kind of activity. So how can I do? Sorry guys, sorry. So how can I do? I can use one inbuilt method, that name is input. That name is input. Okay. So input, input. Now guys, I am going to save this file. Okay. I only just I'm using input, input. Okay. So I'm just again running my code, enter it. Now it is asking something. Cursor stop. So it's asking something like 89. Enter. Again it is stop. So can we design, it will ask like enter a number. Can we provide some label so it will be easy for you? So let me show you. So whatever target. So inside an input you can pass some label like Print. yeah, enter a number, First enter number. enter first number. You can provide some label. Enter a first number. Okay, and colon. It looks good. For second we can also do enter second number. Enter second number. Okay, and colon. Okay, this look cool. Now I'm gonna run again. Okay, so now, oh, something syntax error. Okay, I forget. Here you can see that read the error. I forget what kind. EOL while scanning string literal. So this is a error, syntax error. Syntax error means code error. If you will get a syntax error, na, means something you did on your code, mistake, some mistake you did on your code, like you forget semicolon, something like that. So I forget this semicolon. Syntax error means code error. You did something. So now it's इसमें look सिंगल cool. कोट नहीं दे सकते ना, इसमें सिंगल कोट नहीं दे सकते ना? हाँ दे सकते हैं, स्ट्रिंग जो डिफरेंस भी क्या है है? आप। नहीं नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं है, आप सिंगल कोड ले लो आप या डबल कोड ले लो। स्ट्रिंग यू कैन पास ऑन अ सिंगल कोड और अ डबल कोड। पाइथन दोनों को सपोर्ट करता है। अच्छा, आप अगर सिंगल डिफरेंस तो कोड ले नहीं रहे है। हो, नहीं नहीं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हम कंट्रोल सी, अरे यार कुछ भी टाइप कर दो। ठीक है अभी, नाउ सिंगल कोड पे के लिए काम कर रहा है। सो नाउ आई एम टाइपिंग लाइक 89, एंटर 89। So now I'm going to enter it. What is the result? The sum of two number 89, 89. It's not look good. So what is going on here, guys? Any ओके, idea? इट इज बेसिकली ट्रीटिंग दैट एज अ स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग को जोड़ Exactly. के 89 टाइम दे रहा है। Exactly. It is doing a string concatenate. So राइट। suppose if I have one string, hello, and I have another string plus I'm using like world. Okay. गॉट इट। So what will be the output? Hello world. So so it is treating 89 plus 89. So now what it is doing? Concatenation, string concatenation it is doing. Okay. So here the topic comes into the picture, typecasting. How we can convert our string to integer. So how can we do? So there are two.
there are multiple way. So we know that num1 and num2 is our, what kind of number is it? String type of variable. If I'll check the type of these things, I'll check the type. If I'll check the type, if you remember in our previous session, we used this type method for, it is an inbuilt method through which we can check type of any variable, whether it is a string or not. So let me check the type of these two things. Okay. Again, if I'm gonna enter, I'm gonna enter it. Again, I'm entering 89, 89. Now you can see the type. What is the type of these two number? String. A string. So a string add a string. So it will give a string concatenation. So now we are going to convert this string into a integer. So how we can do this thing? So then we are going to use a typecasting. How we can do typecasting? Let me create x equal to. Now if you want to convert your string into an integer, int, I'm doing, I'm passing my num1 inside it. Okay, this is a typecasting. And then y equal to int. Again I'm converting my num2. तो फिर num आपको आप x plus y करना पड़ेगा आपको. Yes, exactly. Now I'm doing x plus y. And parallelly I can check after अच्छा, converting. चेंज हुआ नहीं हुआ. ओके. Yes, we can check. Undo. Copy. After this I can check our x and y. Got it? I'm saving. या. Let me run this one. Now I'm typing 89, 89. Oh, superb. Now this time we got the sum. So earlier it is a string, now converting integer, and integer will do your, now integer did your addition. Here. Get एक it? बार प्रोग्राम में क्वेश्चन चाहिए. क्वेश्चन. Exactly. Yeah. अगर स्ट्रिंग में सही में स्ट्रिंग दिया तो कैसा होगा? तो फिर कन्वर्ट नहीं कर पाएगी ना वो. Then it will again throw error. What kind of error it will throw? That is क्लास cool. टाइप. Yeah. Sandeep, good question. You raise a very good question. Now, if I'll pass 89, okay, and something like Pankaj, okay, so you cannot perform the activity. So what kind of error you will get? Invalid literal for int with base 10, Pankaj. Okay, so this type of error you will get. You cannot you cannot add like integer and one integer and one string. Okay, you cannot add one literal. And do one thing. अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ना इस यहाँ पे कन्वर्ट करने पे उसने धक्का दे दिया, तो एक काम करता हूँ, अच्छा वो तो फिर स्ट्रिंग ही टीट, तो वो यहीं पे एरर दे देगा कि वो एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकता है एक नंबर में या उसमें. गॉट इट? नहीं कर सकता. यू कैन आल्सो चेंज दैट इनटू डेसिमल तो बाइनरी देन फिर. हाँ, वैसे कर सकते हो कि उसको आप पहले उसका बाइनरी फॉर्मेट निकाल लो, उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करो. अभी बस क्वेश्चन है कि आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को कभी ऐड नहीं कर सकते हो. राइट. राइट. गॉट इट? ठीक है. अभी गाइज आप लोगों ने इतना सारा तामझाम किया, मतलब कि व्हाट वी हैव डन, कि हम लोगों ने नंबर रीड किए जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में आए, फिर उसका टाइप चेक किया, तो चलो, तो ये तो अननेसेसरी कमांड है, इनको करने का जरूरत नहीं. फिर हम लोगों ने यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया, वी यूजिंग इंट वी कन्वर्टेड, एंड देन अगेन वी चेक द टाइप, है ना. सो कोड को कंसाइज बनाओ तो उतना चाहिए, तो क्यों ना हम लोग यहीं पे कर लेते, इसको इंट किया, डाला, और ये नंबर ही उसी टाइम मेरे को कन्वर्ट करके दे देगा कि भैया इसको नंबर जो दोगे आप वो इंटीजर टाइप का ही दोगे. नाउ आई एम गोना रिमूव दिस वन. वो तो मैं समझाने पर्पस के लिए किया था. गॉट इट? लेकिन इधर num1 प्लस num2 मारना है तो क्योंकि x y हाँ, तो सॉरी डिफाइन सॉरी, है. या करेक्ट करेक्ट, ये चीज भी मैंने ध्यान नहीं दी. अगेन वी बैक.
कि हम लोगों को क्या करना है, num1 एंड plus num2। num. Yeah. गाइज इनको हैंड्स ऑन करोगे तो उतना ही सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको जितना हो सके अपने, मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है, इसको आप हैंड्स ऑन करो वो ज्यादा बेटर होगा। Mhm. Okay, so I'm gonna run like entering a number 89, enter 89. Now I'm getting a 78. Let's try something else like 567, enter 890. Now you will get a sum of 40.7. So this is a cool. Mhm. Okay, so this is a way we can do typecasting. So this is how we are converting our int like a string value into a float. Okay, and here same thing like now I'm gonna use this id. So suppose suppose x equal to, you have something written on a string like 78. So if I'll check what is the type of 78. Okay, so you can see sorry, uh, I'm passing constant inside it and checking what is. So if I'll check x, so x I'm getting string type. Okay, so here I'm using int for converting my x into a integer. I'll see now x getting 7, and you can store on some variable too. If I'll using int and like converting my x which is a integer, so it will what is the type of now h, so it will give a type of h is like integer. Okay, so this is a conversion of int value. So same thing using a float. What will happen on float? If I'll open instead of int, if I'm going to use float something like, okay. So अभी अगर मैं ऐसा ट्राई करता, इंटीजर और इंटीजर, मैं अभी इंटीजर ही रहने देता हूँ। इफ आई ट्राई टेकिंग सम फ्लोट वैल्यू 78.5, so it will throw me an error. Got it? You cannot take a float value. It is not going to convert because invalid literal for int with base 10. So it cannot carry the value of any float. Okay. So suppose if you are going to take like I'm ready to work on both the thing like float. If I'm doing a typecasting of both the number as a float, तो अगर मैं देखूं, मैं इसको रन करूं, मैंने लिया क्या लिया था अभी 78.6 लिया था, अब ये इसको एक्सेप्ट करेगा और 56.5 लिया। Data तो I'll type get, का error मिला. no we are not so it add my both the float values. Okay, Mhm. Mhm. और अगर मैं इंटीजर भी लूंगा ना, अगर मैं जैसे 78 ले रहा हूँ, तो उसको ये 78.0 ट्रीट करेगा। समझिए, एरर नहीं Yeah. आएगी फ्लोट के केस में। और अगर Yeah. मैं 67 लिख रहा हूँ, तो आंसर देखो आपको आएगा 140.0। तो ये इस Yeah. केस में मेरे लिए सबके लिए काम करेगा। 78.5 ले लिया और एक मैंने इंटीजर ले लिया, सो इट विल वर्क फॉर बोथ इंटीजर एंड फ्लोट। एक क्वेश्चन, इसमें लॉन्ग इंट शॉर्ट इंट ऐसा रहता था, याद है वो बचपन में सीखे थे, अब ये भी अप्लाई करता है क्या इसमें? कौन सा? लॉन्ग इंट, स्मॉल इंट. वो डेटा टाइप शायद नहीं करते हैं। मैं समझ गया आप इंटीजर के टाइप। इसमें जो सपोर्ट करते हैं न्यूमेरिक टाइप में, वो तीन ही करते हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर, और कोई नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वही जो पढ़ा था 2+3J 3I, 11th में चैप्टर नहीं था, पांचवा चैप्टर था, कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं, नंबर्स। इधर 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 बोल रहा हूँ. हाँ, इधर भी सपोर्ट करता है वो? नहीं, टाइप कास्टिंग में तो अभी इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग करता है ओके. मेजरली। ओके. टाइप कास्टिंग में जो मेजरली सपोर्ट करता है वो क्या करता है, या तो अगर कोई चीज तुम्हारी स्ट्रिंग में, तो उसको इंटीजर में कर देगा या फ्लोट में कर देगा, है ना। या कोई चीज अगर इंट में, तो आप उसको स्ट्रिंग में करना चाहते हो तो वो स्ट्रिंग में कर देगा। अभी जैसे कि ये एग्जांपल है, अभी हमने देखा तो था ऑलरेडी, हम कोई इंटीजर वैल्यू दे रहे थे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट या हो जा रही थी। या हाँ, या है ना। या ठीक है, तो मेजरली जो टाइप कास्टिंग में जो सपोर्ट करता है वो आपका दो ही चीज सपोर्ट करता है। वो क्या करता है आपका,
तीन चीज सपोर्ट करता है, फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रिंग। अगर कोई आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी लाइक सपोर्टिंग वेरिएबल इन इट, तो आप बता सकते हो कि यही तीन है, स्ट्रिंग, फ्लोट और स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर। ओके, तो जैसे कि अभी एक एग्जांपल दूं स्ट्रिंग का, अभी तक फ्लोट और इसका तो देख ही लिया है। अभी जैसे कि फ्लोट है ना, FLOAT, अभी फ्लोट का तो देख ही लिया है, स्ट्रिंग का देख लेते हैं। जैसे मेरा कोई वेरिएबल है, जैसे मैंने लिखा A = 67। अब सबको पता है ए का अगर मैं टाइप चेक करूंगा तो ए का टाइप क्या आएगा, इंटीजर आएगा। एम आई राइट? इफ आई चेक, नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट ए इनटू ए स्ट्रिंग, मेरा ए भाई वो क्या कर दे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे, वो मेरे ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। मैं बी की वैल्यू देखूंगा, देखो सिंगल कोड में आने लग जाएगी। गॉट इट? आई एम कन्वर्टिंग माई ए इनटू अ, तो इवन अगर मेरे को लिखना भी नहीं, किसी वेरिएबल नहीं डालना है, अगर मैं सीधा ए ही पास करूं इसके अंदर, तो वो तब भी मेरे को रिजल्ट 67 ही देगा। गॉट इट? सो दिस इज अवर लाइक टाइप कास्टिंग एंड इनपुट रीड एंड राइट्स। ठीक है। Okay. और गाइज एक और एक्टिविटी है, आज का सेशन क्लोज करते हैं, मॉर्निंग वी विल कनेक्ट। ओके, एंड सो मेक श्योर कि आफ्टर दिस कॉल यू कैन ट्राई दीज थिंग्स। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को एक एक्टिविटी करनी है, पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3, इन दोनों में ना क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या नई चीजें आई थी। तो ट्राई टू रीड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3। तो इसमें ये जो इनपुट वाला कंसेप्ट है ना, पहले रॉ इनपुट होता था और फिर बाद में इनपुट आया, तो इसको पढ़ना कि डिफरेंसेस क्या थे, पाइथन 2 में क्या थे और पाइथन 3 के रिलीज में क्या थे। पाइथन 2 जब आया था ईयर 2000 में आया था, पाइथन 3 जो आया 2008 से स्टार्ट हुआ है। तो इसके सारे डिफरेंसेस पढ़ना कि पाइथन 2 में क्या क्या थे, तो और पाइथन 3 में उसका एडवांस वर्जन क्या आया क्या नहीं आया। गॉट इट? दिस इज योर Yep. एक्टिविटी। Okay. Okay, and do Okay. whatever we discussed yesterday and today. Okay, so I'm Right. gonna close this, I'm gonna stop this recording session. I hope you like this session.